यस वी आर लाइव। एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं और जस्ट बिफोर वी गो लाइव राजश्री बुराइयां निकालना शुरू कर देते हैं मीम में छोटी 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 बातें की। अंजलि ने ये नहीं किया, अंजलि ने वो नहीं किया, अंजलि ऐसी है, अंजलि वैसी है। खैर ये मैं सब करता हूँ। हाँ, मैं करता हूँ। डिडंट यू जस्ट से कि ग्राफिक्स नहीं बनाया? कल मेरी शर्ट पसंद नहीं आई, कल हम परसों कैसे बैठे वो पसंद नहीं आया, साइरस कैसे आता है वो पसंद नहीं आता। एग्जैक्टली यार, मुझे भी नहीं छोड़ा यार। मैंने क्या किया, तुमको क्या बोला? देखो मैं ऑनर नहीं बोल सकता, ऐसी बातें थी। Oh my God, he's learning now. He knows now कि कैसे घुमा करके भिगो करके वापस देना है। खैर anyway, आज हम आप लोगों के साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, लेकिन इससे पहले कि आज की मैच की डिस्कशंस हो, किसी ने तो मैच देखा होगा कल, उनसे चर्चा पहले करते हैं। नहीं, कल मैच देखने का सबसे बड़ा मजा था विराट कोहली, दैट सेंचुरी, बट ऑल्सो द सनराइजर्स बॉलिंग वाज अबिस्मल। आपने I read about that. एग्जैक्टली राइट, भुवनेश्वर कुमार stand out world class bowler, T Natarajan good in the death, but who do you have to support these two? देखिए, आपने मार्को यानसन को नहीं खिलाया because you wanted to bolster your batting. उमरान मलिक, एडन मार्करम को खुद पता है उमरान मलिक के साथ क्या हुआ, 150 में बॉल डालते हैं। पिछले साल के IPL के बदौलत उनको T20 टीम में चांस मिला। उमरान मलिक was suddenly the next big thing as of last year, nowhere to be seen in 2023. आपके पास मार्कंडे को आपने नहीं खिलाया, आप खेल रहे हैं विराट, डिविलियर्स, मैक्सवेल के खिलाफ। यू डोंट हैव अ रिस्ट स्पिनर। आप पावर प्ले में किसके पास जाते हैं? अभिषेक शर्मा। आप लेकर किसको आते हैं? मयंक मार्कंडे। बिजार। बट आइनरिक क्लासन की इनिंग्स की भी बात करनी चाहिए, बिकॉज इन दैट impact from Virat and Faf, a lot of people haven't spoken about Heinrich Klaasen, but what a fantastic innings that was. 100 marna at a strike rate of 200, and his ability to play spin. हम हमेशा बात करते रहते हैं, हम इनफैक्ट क्रिटिसाइज करते हैं आजकल के इंडियन क्रिकेटर्स को कि वो बैटर्स ठीक से स्पिन खेल नहीं पाते, एंड हियर्स अ साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर जस्ट सुपर्ब अगेंस्ट स्पिन। विराट कोहली 600 in the IPL, equal Chris Gill's record, all-time record for centuries in the tournament, and Faf du Plessis just continue to do what he's done. But before I go to Cyrus, this has really opened up the points table even for the last weekend of the league matches, because what happens now is obviously RCB are inching closer to playoff. Mumbai Indians have one game left now. As of today, each of these 10 teams have one game left each. But this PBKS Rajasthan Royals match is also very significant. It's both of them are on 12 points. Rajasthan Royals have a much better net run rate, but what will happen is if Punjab Kings win, they are probably still not going to go through, but they're also going to ये cheat sheet नहीं है ये हमारे table. Exactly. This is going to be a very, very tricky position. Now, the moment Punjab Kings win, Punjab Kings are probably going to take down Rajasthan Royals and themselves because of the net run rate they have right now. They have to win by a massive margin to stay in contention. But even then, they're not going to be sure, because Delhi win tomorrow. Beg your pardon. CSK win tomorrow. They are assured of a playoff berth. And then you have Mumbai Indians and the RCB, who can both get to 16 points. Now, one of Mumbai and RCB lose, then probably if Rajasthan Royals win, they have a chance to compete with the net run rate. So it's gotten very messy in that sense. And that is why you need to do what Gujarat Titans have done for 2 consecutive years. Just keep winning and be consistent, and don't worry about the net run rate, and just let your points take care of it. CSK could have done it had they defeated LSG, but it was a rain hit affected game, so both teams had to share that point. That's why you have that other confusion at the top as well. तो हम लोगों ने यहाँ पे चीट शीट नहीं खोली, मैं ऐसी बोल रही थी। एक्चुअली इन्होंने मैच टेबल खोल दी है और पॉइंट्स की टेबल खोल दी है, जो इन्होंने मुझे बोला था कि बनाना है, बट ठीक है। नहीं, आई मीन हाँ, ये आई मीन सेंसिबल। आप पॉइंट टेबल खोलिए, पब्लिक डोमेन में आप यू जस्ट नीड टू गो ऑनलाइन एंड चेक इट। अब प्रॉब्लम ये होती है, आप पॉइंट्स शायद किसी को पता हो, लेकिन वो नेट रन रेट जो होता है, दैट्स द ट्रिकी बिट। उसमें पता करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज इट्स डाउन टू डेसिमल्स। तो जिस तरह राजनी ने बताया, यस, चांसेस है वही है, लेसे जो लोअर टीम्स जिनके पॉइंट्स कम है, दे कैन जस्ट प्ले पार्टी पूपर्स for the opening team, which I think Gujarat तो safe है। चेन्नई के लिए एक जीत दूर, yes, rain affected game, उनके probability जो थी उस पे कुछ problems हुई। उसके बाद वो कोलकाता से जो हार हुई थी उनके हाथों में, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इतनी inconsistencies चेन्नई के हाथों में दिख रही है, कभी काफी सरप्राइजिंग है, बट yes, गुजरात has been brilliant in the tournament. बाकी आज का मुकाबला भी like equally important, we would say. But yeah, tournament, like I said, I mentioned this before, itna late
We are in the 65th match, Rajshri, and up tak the top 4 has been decided. I think this is the first time that's happening कि इतना late tournament हो गया है. अब तक हमें ये नहीं पता कि top 2 या top 3 भी जो हैं qualify किए हैं कि नहीं. नहीं देखिए पिछले साल क्या हुआ था ना, मुझे लगता है लास्ट वीकेंड के मैचेस रिडंडेंट हो गए थे बिकॉज द 3 वर ऑलरेडी अश्योर्ड. इस बार यू हैव ओनली वन and that too Gujarat Titans, you know, they are assured of a top spot even. But वही हुआ है इस बार क्योंकि we discussed this many weeks earlier, sometime last month, that the top half have been very good, and that is why you had that traffic jam of 14 points with all these teams battling for supremacy, trying to move into the top 5, secure their position in the top 4. Also what happened was Lucknow Super Giants had a bit of a, you know, run down the hill towards the end of that second half. So they lost some momentum. Punjab Kings had been inconsistent. Rajasthan Royals also lost some momentum. So you had a lot of these factors weighing in. RCB, they lost a few matches here and there. I mean, I was really expecting RCB to seal that top 4 spot much earlier, but then that's where you got into that log jam. And also that rain hit match, that sort of affected one more position, I think. Whoever had won could have assured themselves of at least a top 2 finish alongside Gujarat Titans. But again, that comes down to one fact and one fact only, that you have to be consistent throughout the tournament. And it is not easy. In a T20 tournament, momentum is very important because you've seen very often in the IPL, in other T20 tournaments, because I follow all the T20 tournaments around the world, whether it's Big Bash League, etc., etc. You see teams building momentum, and once they do that, they don't lose too many matches on the trot. And when you start losing, you could suddenly lose 3 or 4 matches in a cluster, because the IPL is such a massively, you know, it's such a massive tournament. It's such a long tournament. You have these clusters, and that is why there's confusion. But on a whole, I think this tournament has been the most competitive in many years. So that's been a pleasure to watch. मैं यहाँ पे इससे पहले कुछ भी हम शुरू करें, कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, पर कमेंट्स भी जो अब आ रहे हैं वो लोग थोड़े से अब बेसब्र हो रहे हैं कि हम आज के मैच की टीम्स के बारे में बात करें. तो ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं राजश्री आपका डाल देती हूँ, और आई विल चेंज द सेटिंग सो दैट एवरीबडी कैन सी इट बेटर. तो आज यहाँ पे पूछना ये चाह रहे हैं, एमएलटी बॉय हैं, ये कहते हैं कि कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, इसके क्या सजेशन देंगे, और वो जायसवाल के बारे में भी कुछ बताओगे. जायसवाल के बारे में पूछ रहे हैं. मैंने कैप्टन रखा उनको, जॉर्ज बटलर को वाइस कैप्टन रखा, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ व्हाट वी सॉ इन द लास्ट गेम. हम हमेशा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि धर्मशाला में मैच है, शायद थोड़े सीनियर्स को असिस्टेंस मिले. पिछले मैच में इनफैक्ट थोड़ी सी बारिश की भी आशंका थी, बट हुई नहीं बिकॉज of whatever reasons. How do we forecast the weather? But जो मैंने पिछले 2 दिनों पहले जो मैंने weather forecast देखा था, I think धर्मशाला has been mostly sunny, right? So कभी भी बारिश आ सकती है, कुछ भी हो सकता है. Exactly. ये 2 लोग धर्मशाला घूम के आए हुए हैं. Yes, we know weather changes like that snap. Exactly. I mean, पहाड़ों में कभी आप भी पहाड़ घूमते हैं. नहीं, पहाड़ों में ऐसे कोई नहीं वेदर चेंजेस लाइक. धर्मशाला में होता, अब क्या करें, मतलब हमारे हाथ में तो है नहीं. लेकिन जहां तक हमें पता है, जहां तक फोरकास्ट है, जहां तक हमने देखा है, वहां पे मोस्टली सनी है. एंड आई हैव गॉन विद 6-5 फॉर पंजाब, प्राइमरीली बिकॉज of Livingston and him being in form. Obviously they lost to Delhi Capitals, but I think आज राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी होगा because of the all-round composition of the team. So that's why I have also Samson and Jitesh Sharma and Prabhsimran Singh. Brilliant he has been in this tournament. Shikhar Dhawan, hopefully he can fire for Punjab Kings. R. Ashwin and Liam Livingston, obviously you can't go without Livingston after the kind of knock. Yuzvendra Chahal, the highest wicket taker in the IPL now. Rahul Chahar and Nathan Ellis. Again, I like Nathan Ellis. So you like any sort of flair coming into that bowling lineup, and I think Ellis gets that flair with his variations, and he bowls those different lengths as well. Lengths are very important in T20 cricket. The subs are a little, the impact subs are very high quality cricketers. Shimron Hetmeyer and Adam Zampa. Hetmeyer, because you don't know whether he's going to get an opportunity to bat and how many balls he's going to face, right? Because he comes so low down the order, and the kind of things Rajasthan Royals might pull off, because they've been very innovative, so to say. So you don't know whether he's going to get that, but that's why I want to bet heavily on the top order. And Sam Curran and Kagiso Rabada. Rabada had a terrible game last time against the Capitals, but he's too good a bowler to miss out for the second consecutive time, and in a game that they need to win. You never know what the Stars can do. ठीक है, चलिए आप लोगों ने राजश्री की टीम तो देख ली है. Now it's time to hand over the mic to Cyrus. क्योंकि wait यार, हम तो हाथ देख रहे थे. मैं नहीं दे दी माइक.
ओके ठीक है, आप ही बता दीजिए मेरी टीम, आप ही बता दो मेरी टीम। नहीं आज एनालिसिस अंजलि करेंगी मेरी टीम का। No, but I agree with राष्ट्रीय. I think हमारे जो players हैं काफी similar हैं in terms of जो list हमने बनाई है. यशस्वी जायसवाल is my captain as well. मैंने सैम करन पर फिर भी थोड़ा भरोसा रखा है. As you remember, both these teams are coming back from losses and दोनों का confidence थोड़ा भी low है. They both need to win, तो pressure दोनों पर equally ही होगा. But yeah, सैम करन as much as उन्होंने जब शिखर धवन अवेलेबल नहीं थे उनकी गैर मौजूदगी में भी जो कैप्टनसी निभाई है, कोशिश की कि पंजाब को मेरा एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे रखे. ट्राइड बट more of an all-rounder option because lower down the order he's been scoring runs, he's been picking up wickets. That's why I would want to put my faith on Sam Curran. जॉस बटलर जो धमाकेदार शुरुआत उन्होंने की थी, नाउ समवेयर डाउन द लाइन वो जो स्पार्क था वो कहीं ना कहीं मिस होता जा रहा है. इनकंसिस्टेंसी आ रही है एंड आई थिंक कहीं ना कहीं जॉस बटलर का वापसी करना बिफोर वी गेट टू द टॉप 4 इज इंपॉर्टेंट एंड मे बी वी विल गेट टू नो द सेम. लियाम लिविंगस्टन बिफोर कैप्टन वाइस कैप्टन लोग पूछ रहे हैं कमेंट्स में, भाई ऊपर जो लिखे हैं वो हैं, देख लीजिए. या द बिल्कुल येलो पे जो हाईलाइट कर रखे हैं वो हमारे वो फॉर्मेटिंग ऐसी है. हम टूर्नामेंट में पूरा ही जब से स्टार्ट हुआ है ये लिस्ट तब से ऐसी फॉर्मेटिंग करते आ रहे हैं. ऑल्दो हाँ लिस्ट में पता नहीं चलता है, गेट्स अ बिट कंफ्यूजिंग फॉर व्यूअर्स, वी अपोलोजाइज. बट हाँ टॉप पर ही हमारे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन होते हैं. संजू सैमसन, अथर्व ताइडे हैज बीन गुड इन द टूर्नामेंट, काफी वापसी करते हुए नजर आए हैं. सो आई पुट माय फेथ इन हिम. जितेश शर्मा also in the middle order could be a key factor for the Punjab Kings. And Yuzvendra Chahal, like Rajshri said, wicket taker, a good option. Sandeep Sharma has bowled good. कुछ ऐसे मौके रहे हैं जब उन्होंने पंजाब के लिए मैचेस जितवाए हैं. He's been economical with his bowling. Wicket शायद इतने नहीं मिले हो, लेकिन yeah, as a impact bowler, I would put him in my team. Yeah, आप T20 फॉर्मेट है, अगर आप रन बचाओगे, अगर आप विकेट नहीं ले रहे हो, आप रन बचा दो, इट्स as good as a job because आप चाहे विकेट ले लो लेकिन 15-20 रन दे दो per over, then again yeah, if you're bowling a 4-over spell for 20 runs without taking a wicket, it doesn't add a lot to your wicket tally. Yeah, but if you're defending to your points tally in fantasy. correct, but if you're, for example, if it's a low scoring game, अगर आपका low scoring game है, अगर आप 4 ओवर डालते हो, you give up for example not 20, अगर 15 ऑर्डर रन, exactly, more आप बाउंड्रीज के लिए हिट होते हो उतने आप पॉइंट्स लूज करते हो. तो हम विकेट्स नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं, अगर रन बचा दो तो बेटर है. संदीप शर्मा, यस, ट्रेंट बोल्ट काउंटर करते हुए उन्हीं को विकेट टेकिंग ऑप्शन है and he's been consistently picking up wickets in the tournament, and that's why as a spearhead I put him in my team. And Harpreet Brar in the middle order. And considering जैसा मैंने बताया दोनों ही टीमों के लिए आज इंपॉर्टेंट मुकाबला है एंड दोनों को ही जीतना है. राजस्थान की जो ओपनिंग बैटिंग लाइनअप है, यशस्वी, जॉस बटलर, संजू सैमसन, कहीं ना कहीं लोड ऑन द ऑर्डर जब टूर्नामेंट ऐसे बिजनेस एंड पे आ रहा है, हमने देखा है कि जो लोअर बैट्समैन है उन पे ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ रही है. ये प्रॉब्लम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए अब तक वो पता नहीं है कि उनका मिडल ऑर्डर फायर करेगा कि नहीं करेगा. बट सिमरन हेटमायर, देवदत्त पडिक्कल एंड दिव जोरेल, कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी जो है इनके ऊपर भी, ऐसा नहीं है कि टॉप ऑर्डर ही फायर करेगा तभी राजस्थान जीत पाएगी. सो कहीं ना कहीं जो लोअर डाउन दी ऑर्डर है, राजस्थान के बैट्समैन हैव बीन एबल टू परफॉर्म. और कहीं ना कहीं you don't have to depend on the top order only, और वो राजस्थान ने इस टूर्नामेंट में दिखाया. And Prabhsimran Singh and Nathan Ellis for my subs, and Adam Zampa को भी मैंने अपने I've kept him in the subs, and Devdutt Padikkal, these are my sub options. मैंने इतने impactful player, खासकर ओवरसीज प्लेयर को अपने टीम में इम्पैक्ट सबके उसमें रखा. बट ये इम्पैक्ट सबका रोल आई थिंक अब तो वो टाइम आ गया है. तुम्हारा सवाल बाद में. एक इम्पोर्टेंट मैसेज आया है रंजन चनियान बावा की तरफ से. वो कह रहे हैं कि वेदर क्लियर है आज कांगड़ा से. वो अपनी वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं. देखो तुम्हारी पिच रिपोर्ट आ गई है यहाँ पे, आप बताओ. नहीं, वो तो हमने भी बोला ना कि वहाँ पे आज प्रेडिक्शन है, फोरकास्ट है, सनी फोरकास्ट है. बट वो तो वहाँ है, वो हमें कंफर्म कर दिया उन्होंने. लेकिन बस टॉस और पिच रिपोर्ट भी मांग लेता अगर वो वहीं पे ग्राउंड के पास हो. तो भास्कर जाट कह रहे हैं कि कैन स्पिनर्स प्ले मोस्ट रोल टुडे इन धर्मशाला. ऐसा कोई हुआ नहीं है where spinners have had that kind of role. Mostly been pacers. It's aided pacers or batters. I mean, अगर pacers were the one that got plunked in the previous match, तो pacers ही पिटे. Exactly, सारे के सारे पिटे थे वहाँ पे. कुछ रबाडा बहुत बुरी तरह से पिटे थे. लेकिन मेरे ख्याल से देखिए पंजाब
साथ प्रॉब्लम ये है कि दे हैव टू फिगर आउट वन कंसिस्टेंट एरिया. आप राजस्थान रॉयल्स की टॉप ऑर्डर की बात कर रहे थे. एटलीस्ट यशस्वी जायसवाल हैज बीन सुपरबली कंसिस्टेंट. ऑब्वियसली दे नीड टू गेट ओवर दैट गेम अगेंस्ट आरसीबी वेयर दे वर बोल्ड आउट फॉर 59. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, लुक एट द वे जायसवाल हैज प्लेड. एंड यहाँ पे दिस इज वेयर today what Jaiswal does will define his future, define the way we look at him also. I mean, he has a bright future, obviously. Correct. Hopefully he'll play for India very soon, but today is that big stage. हो सकता है राजस्थान, exactly, हो सकता है आज राजस्थान जीत के भी playoffs ना पहुंच पाए, but here is one young man who would facilitate that position for the Royals after Correct. Playing so well throughout the tournament. So that is going to be very significant to watch. On the other hand, प्रॉब्लम तभी बढ़ सकती है अगर यशस्वी जायसवाल कुछ कर ना पाए एंड ही गेट्स आउट. दैट क्रिटिसिज्म कैन कंपाउंड. पूरे टूर्नामेंट में आपने अच्छा किया, लेकिन आप जो क्रूशियल मूवमेंट्स आए था वो अच्छा ना कर पाए, तो क्रिटिक्स ऑलवेज नीड दैट फॉर. क्रिकेटर्स भी बड़े मैचेस में कुछ कर नहीं पाते, लेकिन ही इज अ यंग क्रिकेटर, सो लेट्स गिव हिम दैट लीड. टोटली. आई मीन मौका है उनके पास वो हीरो वाली पारी खेलने का. बट जॉस बटलर एंड संजू सैमसन कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूशन, थोड़ी कंसिस्टेंसी उनको रखनी जरूरी है. वेदर दे डू इट और नॉट आज ही पता लग जाएगा. बट अगर आज दोनों में से एक भी टीम हारती है, तो आई थिंक लाइक ऑलमोस्ट वर्चुअली दे आर आउट ऑफ द टॉप. जो भी हारती है, दे आर गॉन, बिकॉज़ यू सी द टॉप गुजरात टाइटंस ऑब्वियसली देयर, चेन्नई सुपर किंग्स are 15. There'll be 3 more teams more than that, which is Mumbai Indians, RCB already on 14. PBKS will, if PBKS win, they'll go to 14. So if Rajasthan Royals win, they'll get to 14, and the loser will stay with 12 points. So they're eliminated. Right. Okay. Now the tricky part would be if Punjab win. Punjab win, they'll obviously go to 14 points, but that's all they will finish with. But their net run rate has taken a battering, right? So exactly. So they will need to win against the Rajasthan Royals by a huge margin. RR ka net run rate is in the positives. So there they'll have a leeway, but they'll also want to win by a big margin, so as to get better than either Mumbai or RCB if they happen to finish on the losing side on Sunday. So Sunday is going to be that critical. So वो net run rate वाला जो play Sunday खराब करोगे फिर हमारा. नहीं, Sunday आपके लिए तो entertaining होना चाहिए. घर पे होंगी मैं. तो फिर लाइव करवाओगे दो डब. नहीं, हम तो डबल हेडर्स में एक ही लाइव करते हैं ना वीकेंड को. He's like, why is she cribbing so much? खैर, anyway, एक लास्ट ले लेते हैं कि मैसेज जो आए. ग्रैंड लीग टीम है क्या आपकी कोई? ग्रैंड लीग टीम, ग्रैंड लीग टीम अभी immediately I would actually wait for a couple more games because मुझे ये fathom out करना है whether I would want to play someone like Virat Kohli in that grand league team, because he scored runs, but has he scored runs at the crucial junctures? I mean, Sunrisers Hyderabad ke saath, okay, you keep that innings aside, right? But a couple of 200-run chases, Kohli got out early. He's been questioned over his strike rate. It's been mostly Faf du Plessis, Glenn Maxwell. Again, they've also had a few 100-run partnerships. So it'll take a little bit of time. Maybe after the league stages, you'd be in a better position to understand which players to pick and which bowlers to pick, essentially, because of the impact that they've had. Wickets at the power play, how many overs you're going to essentially bowl. That's why I don't have someone like Shimron Hetman in my main playing 11 yet, because I don't know whether if it's a very good service, whether he's actually going to come out and bat. What if the Royals are chasing 160 and you don't need Hetman to bat, and if they win by 8 or 9 wickets? So a lot of combinations will still be at play. Okay. You have anything to say on this? No, I mean, Grand League बताना भी मुश्किल है. हाँ, there are certain favorites जो Grand League में add हो सकते हैं, जिस तरह राष्ट्र ने बताया. Faf du Plessis is one of them. यशस्वी जायसवाल is also another one who could be added, and मोहम्मद सिराज गेंदबाज हो गए, उनको भी ऐड किया जा सकता है. But again, it's too early. Maybe after the league stage is finished, we can maybe decide कि हाँ ग्रैंड लीग में ये हमारे प्लेयर्स होने चाहिए, because अभी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो प्लेयर्स हम ग्रैंड लीग में डाल सकते हैं. But yeah, it's a bit too early right now. ठीक है, ये ट्रू एक जर्नलिस्ट की तरह इन्होंने कहा कि नो रिस्क, हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, बाद में बताएंगे आपको जब स्थिति थोड़ी साफ हो जाएगी. तो तब तक आप इंतजार कीजिए और वॉच योर मैच, एंजॉय योर गेम, एंड maybe this time instead of popcorn they can have a samosa. Oh my God. ये तो plug.